plant breeding for disease resistance, right? We people have already discussed the steps, 5 steps, right, which are involved in any plant breeding technique. So by using the same steps, we are going to make plant, right, which are disease resistance. Now, अब आप मुझे बताओ disease किससे होते हैं? Then answer comes in your mind is your pathogens. What are pathogens? Pathogens माने you can say your bacteria, fungus and viruses. ठीक है बच्चा जी, तो ये जो है आपके pathogens है, right? This pathogens, right, decreases the yield of crop, especially if you are talking about your tropical climates. Okay, ये जो crop की yield है, it may decreases up to 20 to 30% या फिर total, right? So in this case, plant breeding plays a very important role in making plant disease resistant. ठीक है? Now, if you are making plant disease resistant, right, then it reduces the use of fungicides as well as your bactericides. अगर आप प्लांट को ही disease resistant बना देते हो by using plant breeding techniques, then there is no need of bactericides and fungicides. Thus, their dependence decreases. Now, if I am using the term resistance, इसका मतलब क्या होता है? Have a look what I have written. Resistant to host plant is ability to prevent the pathogens from causing disease. And this is determined by genetic constitution of our host plant. Simple सी बात है. Resistance का मतलब क्या होता है? It's an ability to prevent attack of pathogen. Simple as that. Pathogen यहाँ पे कोई भी हो सकता है. It can be virus, fungus or it can be your bacteria. Okay. Now look. किसी भी प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम के लिए सबसे पहली चीज फॉर मेकिंग दिस प्लांट डिजीज रेजिस्टेंस यू मस्ट रिकॉग्नाइज द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, राइट? आपको पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, वेदर वो बैक्टीरिया है, फंगस है, वायरस है, वो डिटरमाइन करना पड़ता है. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो आप सबको पता होनी चाहिए इज मोड ऑफ ट्रांसमिशन. ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए फॉर इफेक्टिव प्लांट ब्रीडिंग. नंबर 1 इज कॉजेटिव एजेंट, कौन ऑर्गेनिज्म डिजीज कॉज कर रहा है, एंड सेकेंड वन सेज your mode of transmission. So have a look over here what I have written. I have written some diseases which are caused by fungus. Says brown rust of wheat, red rot of sugarcane and leg blight of potato. ये सारे disease है are caused by fungus. ठीक है? Now if you are talking about bacteria, the disease caused by bacteria are black rot of crucifers. बच्चा जी ये सारे disease के names हैं. And if you are talking about disease caused by viruses, right, then this includes your tobacco mosaic and turnip mosaic. We people in class 11 have understood tobacco mosaic virus. ठीक है? So these are some of the disease which are caused by fungus, bacteria and viruses. तो ये हो गया आपका introductory portion. What is the need for making plant disease resistant? सिंपल सी बात है. Now we are going to discuss methods. How we are making plant disease resistant. तो इसके लिए there are two methods. इसके लिए we are having two methods. Number 1 is conventional breeding and second one is mutation breeding. So let's talk about conventional breeding. If we are talking about conventional breeding, तो ये normal breeding होती है which involves crosses of one parent with another parent. In the sense ये दोनों parents कैसे होने चाहिए? Superior one. कैसे होने चाहिए? Superior one followed by selection. तो सिंपल सी बात है, आपने कन्वेंशनल ब्रीडिंग में क्या करवाया? हाइब्रिडाइजेशन करवाया. हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है क्रॉस ऑफ वन पेरेंट विथ अनदर पेरेंट. ठीक है? विच रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनीज. उसमें से आपने
आपने बेस्ट सिलेक्ट करा. So conventional breeding includes hybridization and selection. Okay, फिट कर लो. What it includes? Hybridization and your selection. ठीक है. Again, the steps which are included are common as we have already discussed. That is what? Your selection from germplasm, that is collection of variability, right? उसमें से आपने best select करा. Evaluation of germplasm for yes obtaining parents, then cross hybridization of parents. फिर क्या किया आपने? Evaluation, right, for your superior progenies, and then test, release and commercialization. तो ये जो सारे steps है are the same in case of your conventional breeding. Now have a look the crop varieties which we have created by this hybridization and selection. In our NCERT book, one tabular form is given, and this is very important. These are some crop varieties, right, which we have created by hybridization and selection. तो आप देख सकते हो this represents your crop. ये column क्या represent करता है? Variety. And this column represent to which disease we are making that plant resistant. ठीक है. So first if you are talking about wheat, उसकी variety है हिमगिरी. Okay, and this is resistance to leaf and strip rust and hill bunt. These are the name of diseases which are caused by different pathogens. Second says your brassica. उसकी वेराइटी है पूसा स्वर्णिम, जिसको आप बोलो करण राई. ओके, एंड दिस वी आर मेकिंग रेजिस्टेंट टू व्हीट रस्ट. ठीक है. अगेन आई एम सेइंग द टेबल इज इंपॉर्टेंट वन. चलो नेक्स्ट इज योर कॉलीफ्लावर. उसकी वेराइटी नंबर 1 से पूसा सुब्रा, and second one is your pusa snowball K1. We are making it resistant to black rot and cull blight black rot. Next comes your cowpea. उसकी variety क्या है? pusa komal, and we are making it resistant to bacterial blight. Simple से, right? Then comes your chili. If you are talking about this chili, उसकी variety क्या है? pusa सदाबहार, and we are making it resistant to chili mosaic virus, tobacco mosaic virus and leaf curl. Okay, so once again this table is important. One, you people have to prepare. This is important once again for MCQ point of view. Okay, so these are some of the crop varieties which we have made, right, disease resistant by hybridization and selection. Okay, so now if you are talking about this conventional breeding, ठीक है, then this conventional breeding is constrained. Constrained का मतलब होता है it is restricted. This conventional breeding is constrained or restricted to limited number of available disease resistant gene in cultivated crops and their wild varieties. इसका मतलब ये होता है कि in cultivated crops which we are using right nowadays which we are using, right, और उसकी wild variety, मैंने आपको definition पढ़ाई थी what is crop wild variety. ठीक है. तो ये दोनों में the number of disease resistant gene is very limited. मतलब उससे ही आपको काम चलाना है, and that is why one line is written that is conventional breeding is constrained. It is restricted. Why it is restricted? क्योंकि हमारे पास बहुत कम और we can say limited number of disease resistant gene है. Okay, so this is your conventional breeding. To overcome this problem, we are having second type of breeding जिसको आप बोलो mutation breeding. इसको क्या कहा जाता है? म्यूटेशन ब्रीडिंग. अब इन जनरल म्यूटेशन का मतलब क्या होता है? अनवांटेड चेंज इन डीएनए सीक्वेंस. अनवांटेड चेंज इन डीएनए सीक्वेंस इज कॉल्ड एज म्यूटेशन. इसको क्या कहा जाता है? म्यूटेशन. ओके, बट दिस म्यूटेशन इज वेरी हेल्पफुल इन प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम. ओके, if artificially we changes
the DNA sequences or the base pair sequences present in DNA, there is possibility कि आपको disease resistant gene मिल जाए. There is possibility that you will get disease resistant gene. उसको आप उठा सकते हो? Yes or no? Yes. So once again what I am saying, mutation का मतलब होता है genetic variation. म्यूटेशन का मतलब क्या होता है? जेनेटिक वेरिएशन. जेनेटिक वेरिएशन इन द सेंस व्हाट? जेनेटिक वेरिएशन इन द सेंस वी आर टॉकिंग अबाउट चेंज इन बेस पेयर्स ऑफ डीएनए. चेंज इन बेस पेयर्स ऑफ डीएनए. अब बेस पेयर आप सबको पता होगा, ATCG. यस और नो? यस. इफ यू आर गोइंग टू चेंज दिस बेस पेयर्स, देन जेनेटिक वेरिएशन होगा. इसी को कहा जाता है म्यूटेशन. हाउएवर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक इन चैप्टर नंबर 5. ठीक है, अभी के लिए इतना याद रखो, म्यूटेशन होता क्या है? जेनेटिक वेरिएशन होता है. ओके, दिस म्यूटेशन कैन बी क्रिएटेड आर्टिफिशियली by means of chemicals or by means of radiations. Radiation says your gamma radiation. ठीक है, गामा रेडिएशन से आप म्यूटेशन इंड्यूस करवा सकते हो. वंस यू हैव इंड्यूस्ड म्यूटेशन, राइट, सेकेंड पॉइंट कम्स व्हाट? सिलेक्शन ऑफ योर डिजायर्ड डिजीज रेजिस्टेंट जीन. यस और नो? I am once again saying there is might be possibility. It is not confirmed. पॉसिबिलिटी हो सकती है कि डिजीज रेजिस्टेंट जीन आपको मिल जाए. सिंपल एज दैट. ठीक है, इट इज अगेन अंधेरे में तीर, ऐसा होता है वो. ओके, सो दिस इज योर म्यूटेशन ब्रीडिंग इन विच वी आर गोइंग टू इंड्यूस म्यूटेशन. फॉलोड बाय इंड्यूसिंग म्यूटेशन वी आर गोइंग टू ऑप्ट फॉर योर डिजीज रेजिस्टेंट जीन. वी आर गोइंग टू इनकॉर्पोरेट द सेम इन प्लांट्स. वी आर गोइंग टू इनकॉर्पोरेट सेम इन प्लांट्स. एंड एग्जाम्पल सबको याद रखना है. बाय दिस म्यूटेशन ब्रीडिंग, देखो कौन सा एग्जाम्पल लिखा है मैंने? मूंग बीन. ओके, इन मूंग बीन रेजिस्टेंस टू येलो मोज़ेक वायरस एंड पाउडरी मिल्ड्यू. दिस वॉज इंट्रोड्यूस्ड by mutation. This was introduced by mutation. ठीक है, so ये example है. Again it is very important. तो ये हमने बात करी conventional breeding की and mutation breeding. Conventional breeding में ये सारे examples आते हैं and mutation breeding में ये मूंग बीन आता है. Okay, now if we are talking about wild varieties, crop wild varieties, क्या होती है इसकी definition? आगे के वीडियो में मैंने आपको पढ़ाई है, राइट? क्रॉप वाइल्ड वेराइटीज आर नथिंग बट they are crops which are more or less genetically identical to cultivated crops, but they are not domesticated. Okay, so if you are talking about this wild varieties, then this wild varieties have disease resistant gene, but the yield is very less. Yield है वो बहुत ही कम है. तो what we are going to do? We are going to isolate that disease resistant gene from wild variety and we are incorporating in a plant who gives us more yield. Simple as that. Biotechnology tools हमने पढ़े कैसे we are going to isolate your gene, right? How we are going to ligate, how we are going to introduce into host cell. ये सारा का सारा we people have understood in biotechnology. Okay, we are going to apply the same in plant breeding techniques. Okay, तो मैंने क्या बोला आपको? disease resistant gene मैंने कहाँ से लिया? wild variety से लिया. किसमें incorporate किया? in a plant who gives us more yield. Simple as that. इसका एक example mention किया गया है. देखो, here I have written resistance to yellow mosaic virus in भिंडी. सबको पता है भिंडी क्या होती है? साइंटिफिक नेम नहीं पता होगा, ये आपको याद रखना है. दैट इज योर, दिस इज द साइंटिफिक नेम एबेलमॉस्कस एस्क्युलेंटस. ओके, दिस इज भिंडी, राइट? इसमें हमने रेजिस्टेंस डेवलप करा टू येलो मोज़ेक वायरस. ओके, was transferred from a wild species and resulted in formation of new variety, and new variety is Prabhani Kranti. New variety is Prabhani
Kranti. Am I clear? So this is one example of disease resistant gene which we have isolated from wild species. So this is your short and sweet plant breeding for disease resistance. ठीक है? I hope the topic is clear to you all. Thank you very much.